अस्सलाम वालेकुम, हाय फ्रेंड्स। आज क्या बनाने वाली हूँ मदिया? आज हम कुछ स्पेशल बनाने जा रहे हैं जो अम्मी की फरमाइश हमेशा होती है। इट्स अ फेवरेट टी टाइम स्नैक, राइट? इट्स योर फेवरेट नाउ? Yes. इससे पहले फेवरेट नहीं था लेकिन अब हो गया जब से मैंने बनाना शुरू किया है। Exactly. तो It's a very easy and simple. मुझे इजी एंड सिंपल इसलिए लगता है कि मुझे तो बना बनाया ट्रे पे आ जाता है। और मुझे इसलिए लगता है क्योंकि सही में बहुत इजी और सिंपल रेसिपी और बहुत ही टेस्टी है, बहुत यमी। तो ऑन अम्मीज फरमाइश फॉर ऑल ऑफ यू दिस इज पीकन टार्ट। पीकन को पिकान भी कहीं पे बोलते हैं बट आई प्रेफर टू से पीकन, सो दिस इज पीकन टार्ट। दिखला दो कैसा लगता है दिखने में बेचारा। ये पीकन हमारे पास है, तो ऑफ कोर्स दिस इज द स्टार इंग्रेडिएंट, ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। इसको मैं समझती हूँ ना वॉलनट का कजन है ऑलमोस्ट, और बेटर टेस्टिंग। नहीं, वॉलनट का अपना इतना अच्छा टेस्ट होता है। इट जस्ट लुक्स लाइक थोड़ा वॉलनट इज crooked and crooked. हाँ, कोई लड़की कजन है, थोड़ा सा स्टाइलिश और एलिगेंट सा ड्राई फ्रूट है बट हाँ वॉलनट का कजन, फीमेल कजन। So these are the ingredients. I'm just going to go through them quickly. There's pecans or pecans, eggs. We have tart shells, जो मुझे तो already store से मिल जाती हैं बनी बनाई, तो I don't prefer making it at home, तो मैं तो store से ही ले आती हूँ। तो if of course you get them in a store, that's great. Or if you don't get them, you can have those pecan, what's that? Tart pie dough. Yeah, you can get the dough and shape them. Or you can make the dough at home as well. हम उसकी भी रेसिपी लिंक में देंगे and you can. And I am using brown sugar. You can use white. I prefer. Healthy. खा ही रहे तो थोड़ा healthy खा लेते हैं. And I have some melted butter. और मेरे पास है this is pancake syrup. So I'm going to use maple this. syrup, is it? Yeah, you can use maple syrup or the pancake syrup, whatever you I call always it. thought you used the maple syrup. This is Yeah, butter. this is, but it's butter flavored maple syrup, so Okay. you can use that. And did I miss anything? And I have all-purpose flour hiding here. Oh. So I will give you the measurements as we progress through the recipe. But this is pretty much all you need for these tasty, yummy pecan tarts. Let's start. Let's you start. have to put the oven on. Actually, yes, we can do that. So we'll put the oven on at 350 degrees. And let that preheat. और तब तक हम इसका जो mixture है उसको तैयार करते हैं. अच्छा मदिया, how many shell of these do you have? Count करके बता दो. I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 here. Only? तो हम ही खा जाएंगे. Okay, so we generally make them in bulk, तो कुछ दिन रह भी जाते हैं. Anyway, so to get started, I'm going to start with breaking these eggs into a bowl. And I'm going to take 3 eggs here. Second egg. I think, Ammi, you've never actually seen me make it, right? Never. You just enjoyed the end result. Yes. So I'm just going to whisk these 3 eggs. मैं इसमें electric beater use नहीं करें. I don't need that. So I have never made this and I'm never going to make this. because I make it for you. Yes. Okay. So after the eggs, I am going to take 1 cup with a measuring cup of maple syrup. Ami, can you just press the bottle? So This is about called 1 cup. teamwork. This is called teamwork makes the dream work. Just a little more, Ami. A little more. क्या ज़माना आ गया. Okay, that's about 1 cup. And this Oh delicious my goodness. golden beauty goes into the mix. And then the next thing we are going to add is 4 tablespoons of melted butter, which I already have here. So I'm going to add this. Yeah. So this is basically a custard की तरह form होता है. And now goes in, because maple syrup already sweet होता है, so I'm not going to use a lot of sugar. Ammi, I know that आपको भी बहुत ज़्यादा sweet tarts नहीं पसंद है, मुझे भी नहीं पसंद. So I'm just going to use a little less than half cup of brown sugar.
and I'm going to take 1 tablespoon of all-purpose flour. इससे क्या होगा कि उसका जो ये जो पूरा मिक्सचर है ये बाइंड बहुत अच्छे से होगा इन द टार्ट. नहीं तो आपका टार्ट का जो मिक्सचर है बहुत लूज और वाटरी रह जाता है. तो 1 tablespoon of this, and I'm going to give it a good mix. Oh, one thing that I forgot to show you is a little bit of salt. Salt, yes. So I'm going to grab that while Ammi is going to mix this. So just a pinch of salt. क्योंकि अम्मी उससे क्या होता है? I know. उससे फ्लेवर सारा एनहांस होते हैं. Exactly. और भी कोई बात थी? नहीं, बस यही बात थी. और इसमें मैं ऐड करूँगी half a cup of. Do you think it's done? Yeah, that's okay. Half a cup of pecans or pecans. इनको मैंने तोड़ दिया है, हाथ से ही क्रश किया है because आपके टार्ट में आपको छोटे छोटे पीसेस अच्छे लगेंगे, फुल पीसेस नहीं. तो I'm going to add this and give it a good mix. अच्छा, इसको बड़े वाले ट्रे में कर सकते हैं. Exactly. I mean, आपका एक बार मिक्सचर तैयार है तो you can even make like a pie out of it, like a big pecan or a pecan pie. But मुझे ये bites बहुत अच्छे लगते हैं, you know, चाय के साथ एक individual. Yes, और लगता भी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा कोई sugar consume किया है, right? So this is all done. इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. That's it. I've mixed it well. If at this point आपको sugar taste करना है, you can just like taste it. If you want it more sweet or that is also sweet, फिर आधा कप. Exactly. But because I trust my sugar, so I'm not going to taste it. But you can do that if you want. The next step is a baking tray that I forgot. I didn't forget. And Ammi comes to my rescue. So can I interrupt? Sure. I think you have two in this. Yeah, I thought you were going to separate it because you got your hand, and I thought, well, you were going to do it. Okay. So I'm just going to lay out these beautiful. You can keep it shells close together as well because it's not going. Yeah, it's not going to spread out. Also, if you're using store-bought tart shells, make sure कि आप freezer से थोड़ी देर पहले निकाल के उसको use करें. If you take it out like half an hour before you prepare the mixture, so they become kind of like chewy and gooey. So I would say oven में डालने से at least 5 या 10 मिनट पहले आप उसको निकाल लें, so that would be a good idea. You want a spoon? And yes, please, I would want a spoon. Or you want a bigger one? No, this is good. So what I'm going to do is I'm just going to add this mixture into these shells. Wow. क्या बात है बेटा. I'm not going to overfill them because जब ये bake होते हैं तो थोड़ा सा फूल जाते हैं. You don't want them overflowing. A little bit तो थोड़ा बहुत overflow अच्छा लगता है. Exactly. Make sure कि you're putting a good proportion of the pecans and the syrup. Liquid syrup, yes. मेरे साथ हमेशा ये होता है ना कि लास्ट में बहुत सारा सिरप बच जाता है और pecan सारे खत्म हो जाते हैं. But I always use it again. Just add some more pecans and you're good to go. I mean, do you want to help me? I think you're good at this, so I like watching you do it. I just want to enjoy. Okay, that's fine. I'm almost done. बस हम यही सोच रहे हैं कि कैसे ये बन के तैयार हो और हमारी चाय गरम हो और बस हम लोग बैठ के खाएं. और विंटर में तो और अच्छा लगता है खाना, right? Yes. Especially when they're fresh out of the oven. Oh my goodness, they smell so good. And they taste so good. Even used to make for रमजान, उसमें भी बड़ा मजा आता था. कुछ मीठा खाने को दिल चाहता है ना रमजान में रोजा खोलने के बाद, तो बड़ा मजा आता था. Even किसी को गिफ्ट देने के लिए, like if you're visiting someone and you want to make something homemade, why don't we show them one day like कैसे इसको पैक करने का, and अगर किसी के घर लेके जा रहे हैं. Yeah, I mean we can do that. That's a good idea. Like make a couple of things. जैसे आपने इतनी सारी cookies बनाई हैं अपने channel पे, so we can do like a mix of cookies, like a cookie tray. So like I said, हमेशा जो mixture है वो ज़्यादा रह जाता है और मेरे pecans खत्म हो जाते हैं. So I'm just gonna pop the leftover pecans into the shells. As you can see, I could have filled more shells with it. हाँ. अच्छा एक बात पूछे बेटा, इसके साथ अपने सौतेला बना.
That's right. इसको तो मैं भूल ही गई थी अम्मी. नहीं भूली नहीं थी, डाला था लेकिन भूल जाती तो वो दूसरी बात इसके साथ तो सही में सोतेलापन हो गया. उसमें थोड़ा नट्स भी डालो बेटा. बेचारा चिल्ला चिल्ला के हमको बोल रहा था ये क्या जुल्म किया आपकी बहू ने मेरे साथ. Okay. खुश? Very good. Okay. तो as you can see इसमें अभी मैं और भी shells fill कर सकती थी. I think I could even fill a small pie with it. Yeah, of course. So what I'm going to do is I'm going to save it. इसको मैं wrap करके एक cling wrap से fridge में डाल दूँगी and I can use it again. But for now, these are my beautiful tarts ready. अब last step जो मैं इसमें generally करती हूँ is this. Because they have eggs already in the mixture, so I just take like a brush and I just dab this corner ताकि जब बेक हो उसके बाद इसका बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक गोल्डन कलर आता है. So instead of like beating an egg and then doing it all over again, I just take this mixture and I just try to cover the sides. वाह, बटर भी है, एग भी है, सब बटर भी है, एग भी है, तो पूरा फ्लेवर आपका इसी में आ जाता है. वेरी गुड. सी इसको कहते हैं किफायतमंद. क्या किफायतमंद. Okay. So I'm going to do that with all of them. मजा आता है. इसका जो ओवन में जाता है क्या, इसका जो अरोमा बहुत अच्छा स्मेल आता है पूरा घर खुशबू. अच्छा वेनिला देने का नहीं था? नहीं, I generally don't give vanilla in this because इसका maple का flavor खुद इतना अच्छा होता है. I mean, I don't think you really need vanilla. No, I खाते वक्त तो I never thought about it. Did you think there was vanilla in it जब आप पहले खाते? नहीं, but एक अच्छी सी खुशबू अच्छी सी आती है ना, खुशबू, तो हाँ, maybe इसका It's because of that maple syrup. maple syrup अच्छा. I remember the smell. Yeah. वो अच्छी सी खुशबू. Now it goes in the oven. Now it goes in the oven. It's all ready to go in the oven. How long? 5-10 minutes? No. It takes about 30 to 40 minutes. मेरी चाय ठंडी है. फिर नहीं बना लेंगे. अच्छा. लेकिन इतने छोटे छोटे इतना टाइम क्यों लगेगा? Because ये mixture इतना loose is, of course it needs time to cook. Also, I would suggest कि 30 minutes के बाद keep checking the oven because sometimes आपके oven different होते हैं, तो कभी it just takes 30 to 35 minutes. डालो भी यार. Let's do it. Center. In the center. Bye bye. Bake well. They are ready. Look at them. Smells so good. Thank you for making it for me. No problem. And do you see these corners, Ami? They're Very so nice, golden and brown. How long will you wait till you take this out? Just a little bit ताकि वो थोड़ा cool down हो जाए. थोड़ा harder हो जाए है ना. और थोड़ा हाँ. And guys, while this was in the oven, उसकी खुशबू इतनी अच्छी निकल रही थी. My daughter was like, something smells really good, right, Sakina? What did you say? Something smells very good. Yeah. So we are just going to wait until it cools down and then टूट पड़ते हैं हमने. So I'm just going to open one of them and show you how nice and brown they are. मतलब कितने well cooked हैं. So we just need to make sure that they're at the right temperature and for the right time in the oven. Very good. And that's about it. And sometimes आप जब while it's in the oven, you can also like prick it. क्योंकि मैंने वो किया था, so I pricked it with a toothpick to check. Very well done. But और जब तुम ओवन से निकाल रही थी इसकी sizzling हो रही थी, पता है जब मिक्सचर का. But looks hard and very good. So let's just wait for it to cool down and then we'll serve it. और अम्मी के लिए गर्मा गर्म चाय में बनाऊंगी. देखा कितना easy विजी प्यारा सा ये एक मीठा बन गया. Tea time, dessert or anything you can name it. Thank you for watching. ये काम आज तुम कर लो ना जब इतना बना लिया था. Thank you for watching. Please like, share, subscribe and hit the bell.